and that is abstraction. There are three very, very important things. One is called abstraction, and the second thing is called encapsulation. Okay, so the thing is, what we're going to do is, abstraction is the overall idea that how to break down your system into abstract what? Blueprints. Okay? And what is encapsulation? Encapsulation is, in every blueprint there will be associated properties. There will be associated properties and associated behavior. Okay? With every blueprint, which will be a noun, there will be associated adjectives and there will be associated behaviors. The most beautiful thing is that these properties will not be visible from the outside world. But this behavior will be visible from the outside world. यानी कि for example, कार के बारे में बात करूँ मैं, so कार में जो बाहर इंटरफेस अवेलेबल है, वो क्या है? वो है एक्सेलरेटर पे पाँव रखना, या स्टीयरिंग को यूं घुमाना, ओके, और प्रेस ब्रेक, और प्रेस क्लच, or change the gear. Okay, these are actually the public part which are accessible from that object. Okay, everybody understand? हाँ, उस object की background में क्या हो रहा होगा? कौन सी properties change हो रही होंगी? Which values will be updated? We don't care. Objects will not let you know that which values will get changed. ये बात सबको बात समझ आई? The only thing which will be known to the outside world is the blueprint name and its behavior, which is here. Everybody understand? Okay? अब मैं ऐसे सवाल पे वापस आता हूँ कि for example if I say कि मैंने ये human being design करना है और human being से ये काम करवाना है, specifically ये काम करवाना है, okay? Now the thing is, what's the first thing which will going to happen? It could be possible that I am looking here and I hear something, and what will be that object which will going to tell me that something is here? The ear. The ear will be constantly listening. And can you tell me what will this ear will be listening to? Audio. Actually the vibration, the sound waves. It is actually listening to the sound waves. And actually these sound waves pattern will be sent to brain. Again, can you tell me, can you see that this brain is actually connected to everything? Okay, because the brain is something which is actually, you can say, the judge. It actually decides what to do, the decision. Okay, all these are actually, ये इसको information देते हैं. The brain is the one which actually decides what to do next. Okay. So the thing is, this ear is constantly listening, and you hear something from here. The brain sees that the ear is in this direction, and the sound is coming through this way. What will the brain decide? Body को eyes को What will happen? What? So the thing is this, the brain will going to message the neck perhaps that you have to turn. Okay? You have to turn the neck towards this, and in the direction where the direction attribute will be sent to the neck. That you have to turn, for example, 3D. Everybody understand? Yes. Everybody understand? Yes. So the thing is, कि of course इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं face के साथ यहाँ पर neck भी होगा, ठीक है? और neck का भी कोई noun होगा.
और उसकी भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी whatever और उसको कोई मैसेज मिलेगा and the message is from the brain. Then you have to turn how many degrees? Now for example, let's say के 170 degrees. Yeah, 170 degrees या 135 degrees it has to turn. And now what will happen? The eyes are constantly taking photos. Okay? Eyes are constantly taking photos. Okay? And the neck is moving around. Okay? It could happen that the neck is actually turning, and during that turning, I see. Even if the order was to turn these many degrees, it won't happen like this. It has to take some part, and in that duration, the eye is constantly sending the photos to the brain. Okay? So my brain is receiving the photos. And for example, here, it sees something. And constantly it is actually perceiving that this is not something to be worried about, this is not something to be worried about. And these are not things which can create a sound, which I just hear. Okay? And my neck reaches here, and my eyes receive the photo, and the brain says, okay, stop a while. Here I can see an object, which is actually ringing, whatever. And now the thing is, the brain has decided. Look at after realizing the image, after understanding the image, the brain has actually recognized this picture of an object that is actually snake. And the alarm has started ringing. Oh, something is wrong. Okay? Now the thing is, what will happen next? The brain has recognized that it is actually snake. And this is something which can actually hurt you. Okay? Move away. I can't move away in this direction. Okay? Huh? खिड़की खोल के मैं नीचे नहीं जा सकता। अब मैं साले नहीं बैठा। ऐसा है? हाँ जी। What will happen now? The thing is, I don't have pistol, okay? But I have handgun. What will happen? My brain will actually going to say to the neck again to move around, to look for a thing which I can actually throw to this neck, so that it can move in any direction. So for example, I have seen a laptop. Okay? And I took that laptop and I threw it there. Okay? And the snake moved in forward direction towards me. Now the brain has to take the decision again. And what happened? When I said I ran in this direction, what happened? My legs moved. The brain has sent an immediate message to legs to move in this direction. Okay? And don't forget that my ear is constantly listening. My eyes are constantly listening, seeing and sending photos. Because, look at this, I actually jumped here. Why I jumped here? Because there was a map inside my brain which was actually sent through my eyes. कि भाई मैं इतने हाइट के ऊपर हूँ तो मुझे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा हाइट पे जाए. Okay? All these are actually. अच्छा मुझे तो आपने इस पूरे प्रोसेस में कहीं ये सोचा कि ये जो आईज हैं उस फोटो कैसे लेती? नहीं, वो जो भी रिफ्लेक्शन हो रही है वो कैप्चर करती है, कैप्चर होके वो किस तरह की कौन से अंदर वो छोटे से वो लगे हुए हैं जो कि तुमने आई स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बायोलॉजी में. I mean, have you even imagined for a second that what computation was made by the eyes? Not at all. Okay? All right. This is the power of abstraction. That when you divide your work into pieces, you only look at one thing independently of the other. And I will only going to work on this object or the blueprint.
going to conquer that part. When this work is actually done, it is actually available in the outside world. I can take that blueprint, I can make an object of that blueprint, and I can use it whatever way I want. Okay? That was something which actually changed the entire progress of computer science. I mean, the last 20, 30 years, the greatest progress happened in perhaps the history of human being. And that was actually, one of the pivotal role was actually that it actually made the progress in such a way that it has divided the whole thing into chunks in such a way that one person is assigned to do this work, and he will going to make this work in such a way that it will, I mean, do I need to know what Salik has done? No, not at all. The only thing I need to learn is that whatever Salik has done, I need to understand the interface which it has provided. इसने कोई कार का इंजन बनाया है, तो इंजन बना के कहता है भाई इसकी ये दो पिन्स हैं, इस पे ये वाली यूनिट तार लगाओ, इस्तेमाल करो, खत्म हो गया, ठीक है? ये फ्यूल है, या इस पाथ पे आना चाहिए, and that's it. I mean, अगर तुम कोई कार के लिए नया इंजन है, यहाँ तुम खोल के नहीं देखते. The only thing you need to check is कि भाई इसकी requirements से match होती है नहीं, लेकिन इसका इंटरफेस से को provide कर सकता है नहीं. That's the only thing you care. I mean, how this engine was actually made, we don't care about it. That was something which changed the entire history. The revolution happened. The revolution of progress happened with like an exponential speed. Things started evolving out. Okay? And this is something you will go to learn. Okay? The rest of the course is all about learning and understanding the ground with which we will going to now walk. Okay? And I'm telling you, this could, I mean, what I have tried is, if you don't understand this picture, it's almost impossible to understand. But if you understand this picture, okay, why this abstraction is needed, and why this division into blueprints and conquering one at a time will going to give you a huge advantage. If you understand this, everything will going to come at you so naturally that you will be really surprised and you will feel really, really wonderful. You have really accomplished something. Okay? Alright. Now I am about to move to the first example in which we will go to study how to make these blueprints. Okay? And then how to use these blueprints to make instances of those blueprints which are called objects. Okay? By the way, you already know about objects. I will tell you in why. Okay? Let's start. How to make the blueprint in C++. So there in every language you can do OOP programming, and there could be different syntax, but the idea of OOP is the same. Okay. So in C++ I will going to teach in the first place, and then we perhaps in the end we will going to move towards C#. Okay. I have decided that we will going to learn C#. Okay. Of course that won't be coming in the exam, but that maybe is related to your project. Okay, so you can master that. Okay, और ताकि अगर आप समर में अगर यूनिटी करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं Okay, let's start. All right. Let's make our first example. Okay. What I will going to now let me go back, and I will going to make a very simple first blueprint of one example, which will be one noun, and you have to tell me okay, what are the properties of that blueprint, okay, and what should be the interface. Okay. Now here is the question. So for example, if I say the following. Now look at this. If I ask you to make
complex numbers. है ना? Complex number में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं. आयोटा तो वैसे होता है. Can you tell me if I ask you to tell me what is complex number? Complex number has actually two attributes. Complex number has two attributes. Let me show you. Let me make the blueprint of complex number. So what is a complex number? Complex number is, let me call this complex number. Complex number is the name of the blueprint. Okay? It has actually two properties. And those two properties are, one is integer real and the second is integer imaginary. Okay? Do you think anything else is needed? No, I don't think so. Okay? Alright. Now the next part. Alright. So we want to make this complex number. So these are the two attributes which we want to have. Okay? Now, if I want to ask you that I would like to associate some properties to complex numbers, can you tell me कि complex numbers के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? Addition, we can do addition, we can do subtraction, we can do multiplication, we can ask to find the inverse. We can say to find the conjugate. We can find the mod value. Okay? There are many functionalities associated with complex numbers. Everybody understands this thing. Okay? So how to make those functionalities? We will going to make it here. Okay? Now look at this. So one function will be add. Okay? One function will be subtract. Okay? And there are many other functions, but let's not talk about it. So there are, for example, there is only two functions which I have just want to make. Okay? My question, add function. If I ask you to add complex numbers, there should be how many parameters I should be passing? Two numbers. Sir, two real numbers or two imaginary? No. I have one problem. This is one. Okay. So this is one behavior which we have to make. Okay. This is add, and then there is a subtract. Okay. All right. Addition happen between how many complex numbers? Two. And also subtraction happen between how many complex numbers? Two. What about multiplication? Two. What about inverse? One. Shabash. Okay. What about mod? Mod is होता है कि real का square ले लो और imaginary का square ले लो और बाद में under root ले लो. Okay? हाँ? तो वो भी एक ही आपको blueprint तो एक ही चाहिए ना? आपको एक ही object चाहिए जिसका आपने mod निकाला. Okay? All right. Now, so this is actually the blueprint which is look like. Okay? In C++, that blueprint which I will never going to say again is actually called class. Okay? That is actually called class. Okay? And how to declare that class? Okay, look at the okay? Can you zoom down? Okay, I was going to right click here. Okay? जाओ यहाँ जाओ add में practical add new नीचे देख class आ रहा class okay यहाँ पे कर दो add वो पर स्कूल को सेट होगा ठीक है यहाँ पे ना वो खुद ही बताएगा कि ये class है okay please look at this very carefully class name हमारा क्या नाम है इसका please be careful it is a name mean the name is just like a variable name it can never start with a number and in the name there cannot be any space okay so it's a name of complex number but there should not be any space there is space नहीं होती
प्लीज यार सर तो क्लास हो रही है यार चले चले सर क्या कर रहे हो आप किस तरह तो कैमरा ये दूर बना पेज इधर बस ये एंटर मार फिनिश लुक एट दिस अच्छा कंट्रोल अप प्रेस करो फॉन्ट बड़ा करो सर so that अच्छा लुक एट दिस यहाँ पर ना आपको कुछ लगेगा कि यहाँ पर ये कुछ चीजें बनी अच्छा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाउ यू विल सी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर एक ये फाइल ऐड हुई है और एक ये फाइल है जिसे कहते हैं हेडर फाइल अभी तक आपको याद है आप हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करते थे ये एक्चुअली हेडर फाइल आप बना रहे हैं हाउ डज हेडर फाइल इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट which you will going to make which will be actually visible to the outside world okay and then the most amazing part is that we will not going to implement the blueprint we will actually going to define these functions in a separate file which will be its complex number .c which will be actually separate from its blueprint okay that header file is actually called the abstract data type okay this is actually called abstract data type okay no need to remember I mean वो ऐसे काम करेंगे अच्छा ये इसमें दो चीजें क्या हैं डोंट वरी अबाउट इट ठीक है और यहाँ पर actually in C++ whenever you are defining this class it has actually two parts one actually it has three parts but let's talk about only two parts one is the part which is not which is above public ठीक है उसके साथ आप actually यहाँ पे लिख सकते हैं private okay one is private and one is public what is private in private what you will going to do is you will going to write these attributes the nice thing about these attributes is they are not accessible from the outside they are not at all accessible from the outside what do I mean by that you will learn in a while look at this I will going to make integer real and then I will going to make integer imaginary ठीक है ये मैंने दो प्रॉपर्टीज बनाई तो now look at this मैं यहाँ पर जाता हूँ ये ना दो चीजें क्या हैं मैं थोड़ी देर बताता हूँ अच्छा आप एक और बात मैं यहाँ पर एक और फाइल ऐड करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ cpp source.cpp यहाँ जाकर मैं इंक्लूड करता हूँ iostream using name space std और साथ में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ भला कौन सी फाइल यहाँ पर जब इंक्लूड करते हैं तो ये ना डबल कोट पे करते हैं तो डबल कोट पे लिखते हैं तो ये एक्चुअली खुद ही बता देगा कि आपके फाइल में कौन सी फाइल लगाएगी ठीक है ये जो आपने ऊपर वाली इंक्लूड की होगी ना iostream वो आपकी जहाँ व्यू स्टूडियो इंस्टॉल है वहाँ पर वो फाइल करेगी जब आप डबल कोट में करते हैं तो एक्चुअली वो वहीं से उठाता है जहाँ पर आपका फोल्डर होता है ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर .h आ गई यहाँ पर अब मैं int मेन बनाता हूँ यहाँ पर अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का C1 बनाता हूँ ठीक है मैंने एक्चुअली पता क्या बनाया मैंने उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए अपना पहला वेरिएबल सबको बात सुना मैंने एक्चुअली अब मेरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना मुझे क्लास में थी वो एक्चुअली एक डेटा टाइप है जिस तरह स्ट्रक्ट दी ओनली डिफरेंस इज स्ट्रक्ट के अंदर फंक्शन नहीं बट वहां पर जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो डेटा टाइप बनी है उसके अंदर प्रॉपर्टीज है लेकिन साथ उसके साथ उसी के साथ उसकी फंक्शनैलिटी
और फंक्शनैलिटी अभी हम थोड़ी देर में आएंगे. Everybody understands? Everybody understands? Now look at this. हम एक काम करते हैं, मैं ना इस आप पहले जब स्ट्रक्ट बनाते थे तो उसके इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करते थे. कैसे? C1 डॉट लगाते थे, है ना? ये देखो यहाँ पे कोई फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट ऐसे मतलब है, उसके एट्रीब्यूट हमें क्या करना है? रियल और इमेजिनरी. तो अगर मैं ये करूँ कि इसके ये रियल है ना, अगर मैं जाकर ये कर देता हूँ डॉट रियल इज इक्वल टू 10, ये देखिए जी एरर आएगा. और पढ़े एरर क्या है? कह रहे एरर, देखिए दूर एरर मेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलम रियल इज इनएक्सेसिबल मींस जो प्राइवेट पार्ट है उस ब्लूप्रिंट का उस क्लास का वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है. सबको बात समझ? इट कुड बी पॉसिबल कि आप अगर मैं उन दोनों प्रॉपर्टीज को पब्लिक में डाल दूं तो फिर वो यहाँ एक्सेस होगा, लेकिन मैं वो नहीं करता. Because that is a very bad programming practice. The good programming practice is your attributes should never be accessible from the outside. Okay? Now look at this. इसका मतलब है अगर मैंने इसको असाइन करना ही हुआ तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ना पब्लिक पार्ट में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ void set ri. इसको इंटीजर r में देता हूँ और इसको इंटीजर i. यहाँ मैं लिखता हूँ सेमीकोलन, इसका नाम है सेट रियल एंड इमेजिनरी. ठीक है? ये मैंने फंक्शन की क्या लिखी है? प्रोटोटाइप. क्या लिखी है? अब एक और देखो, अब मैं इस फाइल में जाता हूँ जो इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट cpp फाइल. इन दोनों फाइल छोड़े, ये मैं बाद में बताता हूँ क्या चीजें. यहाँ पर मैं उस फंक्शन की पूरी प्रोटोटाइप लिखूंगा. कैसे लिखूंगा? यहाँ पर लिखेंगे void मीन रिटर्न टाइप void है. पहले आपको बताना पड़ेगा आप किस क्लास का फंक्शन लिखने लगे. कौन सी क्लास का फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलन का बेटा मतलब होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लास. और इसमें कौन सा फंक्शन मैं लिखना है? सेट ri. तो मैं सेट ri को एक्सेस कर लेता हूँ जी. सो क्या पैरामीटर पास होगा? इंटीजर r और इंटीजर i. और इसने करना क्या है? इसने करना ये है जी, इसने करना ये है कि रियल को क्या साइन कर देना है? r और इमेजिनरी को क्या साइन कर देना है? i. ठीक है? नाउ लुक एट दिस. ये जो मैंने रियल को 10 लिखा था उसकी जगह मैं ये करता हूँ डॉट सेट ri. इसमें इसकी वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 11 कर देता हूँ. ठीक है? नाउ लुक एट दिस. यहाँ मैं डीबग पॉइंट लगाता हूँ और चला दे रहा हूँ और इस प्रोग्राम को हम चला देते हैं. ठीक है? बेटा क्या होगा? प्रोग्राम चलाएगा तो क्या होगा? लेकिन वो यहाँ पर आके पहले रुक जाएगा. ये यहाँ पर आके रुक जाएगा. ठीक है? चलाओ F10 F1 वो F5 हो गया. शाबाश. यार ये C1 पे क्लिक कर लो. ये तो वैल्यू यार ही हाँ? अभी तक हमने ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं की. अभी तक हमने ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं. F10 प्रेस करो. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का जब आप एक मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्चुअली वो उस क्लास में से वो वाला फंक्शन कॉल. Everybody understands? Everybody understands? Now it's better. यार ये नहीं होना चाहिए. ये देखिए यहाँ पर मैंने जहाँ C1 बनाया था इसी तरह मैं यहाँ पर C2 बनाया. ठीक है? चलो कर. और मैं यहाँ पे C2 डॉट सेट रियल कॉल करता हूँ और इसमें कहता हूँ 2 3.
प्रधान बात करते हैं। हाँ जी, मुझे बेटा एक बात बताएं, बाकी आप C1 में अभी तक नाइस प्लान, C1 में क्या वैल्यू होगी? गार्डन। C2 में क्या वैल्यू होगी? गार्डन। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब अगर मैं F10 प्रेस करूँगा तो क्या होगा? C1 में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। करो F10, ये मुझे 10 लगा। अब अगर मैं F10 प्रेस करूँगा तो क्या होगा? C2 में 2 और 3 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 और करो F10, 2 और 3 हो। अच्छा दोबारा स्टॉप करके दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ, ठीक है। अच्छा अब मैं 11 प्रेस करूँ, ये कंट्रोल आप करो, कंट्रोल आप नीचे नीचे करो, जब इस फंक्शन में आओ, ठीक है। इस फंक्शन में लिखा है आर आई पास करो, हाँ आर और आई पास करो, F10 प्रेस करो। जब मैं लिखूँ रियल इज इक्वल टू आर, मैंने लिखा C1 डॉट रियल इक्वल टू आर, या मैंने लिखा C2 डॉट रियल इक्वल टू आर। इसे कैसे पता चला कि मैंने C1 वाला को चेंज करना है C2 वाला क्लास? इससे ये कैसे पता चला कि मैंने C1 वाले को कॉल करना है या C2 वाले एट्रीब्यूट को? हाँ जी, क्या कहीं मैंने C1 डॉट रियल लिखा है या C2 डॉट रियल लिखा है? नहीं लिखा। मैं तो कुछ नहीं लिखा। हाँ क्लास दोनों की सही है, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ मैंने क्या C1 डॉट रियल लिखा? नहीं लिखा। या मैंने C2 डॉट रियल लिखा? इससे कैसे पता चला कि मैंने अभी जो वैल्यू बता दें, R और I में वैल्यू वही 10 और 11 की है, लेकिन इससे ये कैसे पता चला कि मैंने जो वैल्यू रियल को असाइन करनी है, ये कौन से वाले रियल को करनी है? C2 या C1? यही मैं सवाल कर रहा हूँ। ये इससे पता कैसे चलता है कि ये रियल कौन सा है? कौन सी लाइन क्या? और से मेरी बात सुनो, वो ये बात है कि जब हम यहाँ लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट रियल फंक्शन है कि हमने बहुत बड़ा झूठ बोला है आपको, इसको ये 2 पैरामीटर पास, इसको एक्चुअली 2 पैरामीटर पास नहीं होते, इसको एक्चुअली 3 पैरामीटर पास होते हैं। और पता है तीसरा पैरामीटर क्या होता है? इसका एक्चुअली नाम, ये तुम्हें सेट रियल नजर आ रहा है ना, सेट आ रहा है, ये नहीं है। इसका असल नाम जो बैक एंड पे उसने रखा हुआ है वो ये है, सेट आर आई। लुक एट दिस। और इसका जो 2 पैरामीटर हैं वो तो है ही है, इंटीजर आर और इंटीजर आई। एक और पैरामीटर है इसके पास जिसका नाम है, सुने गौर से बात, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेरिक मीन पॉइंटर, और यहाँ लिखा हुआ है this is a pointer। और पता है मेन में आओ, मेन में आओ। हाँ वही है, छोड़ दो, मेन में आ जाए आप, वही कंट्रोल टैब कर देना, कंट्रोल टैब कर। हाँ यार 1 मिनट जाइए, ये कंट्रोल टैब था, ये छोड़ दीजिए। जब हम यहाँ पे करते हैं ना C1 डॉट सेट रियल कॉल, एक्चुअली ये C1 डॉट रियल नहीं होता कॉल पता कैसे होता है? ये एक्चुअली खुद ब खुद ये लाइन कन्वर्ट हो जाती है, पता किसमें? सेट आर आई, ये वाला फंक्शन कॉल करो, इसमें जो 10 भेजना है वो तो भेजना ही है, 11 जो भेजना है वो भेजना ही है। यहाँ पे जहाँ C1 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एड्रेस ऑफ C1 में कन्वर्ट होता है। जब एड्रेस ऑफ C1 में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर बेस में किसका एड्रेस आता है? और जब हम रियल एक्सेस करते हैं तो वो एक्चुअली पता है क्या एक्सेस करता है? वापस हाँ CPP में जाओ, और भाई CPP में चला तेरी जाना। यहाँ पर जब लिखा हुआ है ना रियल, ये एक्चुअली रियल कैसे एक्सेस करता है? ये रियल एक्सेस नहीं करता, ये एक्चुअली एक्सेस करता है जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं ना, तो वो एक्चुअली ट्रांसलेट करता है दिस, क्या दिस एरो, यू नो अबाउट एरो, ठीक है ना? इसका एक्चुअली मतलब क्या है? सोना दिस स्टेरिक डॉट, इसका शॉर्टकट ये बात सुना? एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये तो नजर आ रहा है दिस, ये दिस में एक्चुअली तो नजर आ रहा है एड्रेस आ रहा है, ये एक्चुअली C1 का एड्रेस है, एंड यू कैन सी द वैल्यूज
ये कौन सी वैल्यू है? ये रियल और इमेजिनरी दोनों की वैल्यू है। ये जहाँ पे रियल लिख रहा है इसके बाद इसके पहले लिख दो दिस एरो। सर ऊपर जाना दिस पास नहीं किया। नहीं किया, मैं कह रहा हूँ हिडन हो गया, वो नजर नहीं आता। यहाँ पे दिस एरो लिखोगे तो हो जाए। और छोड़ो बस कर दो, आगे नीचे वाले लाइन में दिस एरो रियल, और इसको भी कर देंगे दिस एरो इमेजिनरी। Okay? This actually becomes everybody understand? Everybody understand? अच्छा आप मुझे वापस जाओ, ठीक है? इसका मतलब बेटा ये है कि ऐसा रुके बेटा, ये दोनों हमने काम कर लिए। अब हम डॉट एच में जाते हैं। यहाँ पर इस तरह मैंने सेट लिखा है ना, इस तरह मैं void print complex लिखता हूँ, ठीक है? जब print complex में मुझे कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि दिस उसके पास पहले ही आ, तो कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसके सीपीपी में जाएंगे, यहाँ जाकर void complex number कॉलन कॉलन जी प्रिंट कॉम्प्लेक्स, इसको कुछ पास नहीं होता, ये सी आउट करता है क्या बोला? ये दिस एरो, हाँ जी बताएं, रियल जी क्या करें? दिस एरो, यहाँ क्या करें? जी बताएं, दिस इमेजिनरी जी। दिस आप ना भी लगाना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ एक जानबूझ के कह रहा हूं ताकि इस का एट्रीब्यूट एक्सेस कर, ठीक है? ये एरो दे रहा है सी आउट का, कि सी आउट मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता? इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ आ गए और ये देखिए C1 डॉट प्रिंट कॉल कर देते हैं, ठीक है? और फिर हम कर देते हैं सी आउट एंड एल, और यहाँ कर देते हैं C1 डॉट प्रिंट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ कर देते हैं सी आउट, ठीक है? ठीक हो गया? पहला करंट 11 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 2 एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, ये मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा हेडर फाइल में जाता हूँ। अब एक और बात है, मैंने ऐड फंक्शन लिखा है, मैंने याद आपको कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड की फंक्शनलिटी आनी है और सब्ट्रैक्ट की फंक्शनलिटी। मुझे बताया जो ऐड है, उस ऐड में आपने कहा था कितने पैरामीटर पास होते हैं? 2। मेरा सवाल यह है, बाकी 2 पास होते? 3 नहीं ना, 5 होंगे। अगर मैं C1 और C2 दोनों को ऐड करना है, C1 और C2 दोनों को ऐड करना है, एक्चुअली मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास का ऐड कॉल करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास का ऐड कॉल करना है, तो मुझे इसका मतलब है कि एक क्लास की ऑब्जेक्ट का ऐड कॉल करना होगा। तो मैं कैसे कॉल करूंगा? C1 डॉट ऐड, देखिए इस तरह मैंने C1 डॉट सेट, तो C1 डॉट जब ऐड करेंगे तो C1 कैसे चला जाएगा? ऐसे दिस चला जाएगा, और इसका मतलब है मुझे दोबारा क्या C1 भेजने की जरूरत है? तो मुझे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ऐड में एक पैरामीटर भेजने की जरूरत होगा, जो कि होगा C2, ना जो होगा C2, जिन दोनों को उसने ऐड करना। C1 वो होगा जो कि एज ए दिस चला जाएगा, C2 कौन सा होगा जो कि एज ए जो ऐड होना है, और C3 ये अंदर बनाकर रिटर्न करेगा, जो कि एक नया टेम्परेरी बनेगा जिसमें रिजल्ट होगा, जिसके रियल और रियल को ऐड करके हम वैल्यू साइन कर देंगे और इमेजिनरी ऐड करके जमा कर देंगे, और वही रिजल्ट हम रिटर्न करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लुक एट दिस। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम होगा जी, इस ऐड की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? गलत, कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इसकी रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, और इसको पैरामीटर में क्या पास करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पास करके नाम रखते हैं C2। C1 में क्यों नहीं रखा? C1 के थ्रू ही तो मैं कॉल करूंगा। ऑलराइट
जी आप ये देखिए जी, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर मैं गया, यहाँ जाके ये मैंने बना दी। क्या गलती है इसके अंदर? यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप तो मैंने लिख दी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा। ये प्लीज जरूर देख लीजिएगा, वरना ये आपके इस तरह के एरर आएंगे। ठीक है, एक दफा मैंने रिटर्न टाइप लिखी है और एक दफा मैंने उसकी क्लास का नाम लिखा है। ठीक है, अच्छा अब इसने करना क्या है, इसने एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट, और यहाँ आ जाएगा रिजल्ट डॉट, हाँ जी यहाँ पर मैं रियल एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई? तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वजह क्योंकि मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ। जब मैं ब्लूप्रिंट की इंप्लीमेंटेशन के अंदर बैठा हूँ तो मैं जितना मर्जी से यूज करता हूँ, ये बात नहीं। लेकिन जब मैं मेन में होता हूँ तो मेन में मैं जब मैं ब्लूप्रिंट लिख रहा हूँ तो मैं मुझे तो एट्रीब्यूट एक्सेस करना ही करना है, ये बात नहीं। जब आप एक इंजन डिजाइन करें फिर तो मैं उसकी हर चीज एक्सेस करता हूँ, लेकिन जब मैं उस इंजन को यूज कर रहा हूँ विद मींस आई एम इन मेन, तो फिर मुझे सिर्फ उस इंजन की ये चीज चाहिए कि ये वाली तार मैंने कहाँ लगानी, ये वाली तार मैंने कहाँ लगानी, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट रियल इज इक्वल टू, एक तो दिस डॉट रियल हो जाएगा, दिस एरो रियल प्लस C2 डॉट रियल, और ये हो जाएगा रिजल्ट डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एरो इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी। ठीक है, और रिटर्न से करवा देंगे, रिटर्न से करवाएंगे, ये रिजल्ट हमने रिटर्न कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, नाउ द थिंग इज कि हम एक्चुअली एक काम करते हैं, यहाँ पर जब हमने C1 C2 बनाया था सेट करने के बाद, अब हम एक काम करते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर C3 इज इक्वल टू, हम करते हैं C1 डॉट ऐड कॉल किया और इसमें क्या पैरामीटर पास कर दिया, C2 पास कर दिया, और यहाँ क्या आ रहेगा C3, और यहाँ पे C3 डॉट प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर C आउट एंगल कर देंगे। कैन यू टेल मी कि क्या आउटपुट होगी? C1 और C2 की एडिंग के बाद जो आंसर आएगा वो, तो इसको ऐसा करते हैं ना कि ये C1 लिख देते हैं, प्रिंट करने के बाद लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे देते हैं एंडर। ठीक है, और यहाँ ले देते हैं क्या, C आउट इक्वल, ठीक है, इक्वल टू के बाद ठीक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन, ये बस ना। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात बताएं, यहाँ पर मैं C1 डॉट ऐड कर रहा हूँ ना इज इक्वल टू C2, व्हाट इफ के मैं यहाँ पर भी C1 लिख देता, आप क्या C1 के अंदर C1 ही आया, which means आप बता सकते हैं कि C3 की क्या वैल्यू आनी थी, 20 और 22, ये देखो 20 और 22। व्हाट इफ के मैं यहाँ पे C2 डॉट C2 ही कर देता, आप क्या C3 में वैल्यू आई, 4 और 6 व्हाट इफ कि मैं C2 यहाँ करता और C1 यहाँ, तो फिर भी वही वैल्यू आती है, ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट, ये हमने ऐड कर और प्रिंट भी, ठीक है, ऑलराइट। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है मुझे कि आपने इसका आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनानी है, इसमें आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनवर्स के अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं जाएगा क्योंकि उसने उसका इनवर्स निकाला, तो उसकी रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स ही होगी, उसने कोई भी निकाला। ठीक है, ये जितनी भी आपने क्लास बनानी है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपको पोस्ट कर दूंगा। कल आपकी अगेन वही 2:30 बजे क्लास है, 3 बजे एक्चुअली शुरू करते हैं और 3 बजे प्लीज़ आप सारे आ जाइए। और आपने, मैं आपको बता रहा हूँ टास्क, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करके लानी है,
और वहीं बैठकर हम अगली क्लास और बनाएंगे जो कि फ्रैक्शन की क्लास। फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए बता सकते हैं आप? डिवाइड की फॉर्म में एक रियल एक ऊपर न्यूमरेटर होगा, उनको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और ये बात समझ आ गई? ठीक है, कल 3 बजे सारे के सारे आ जाना, 3 बजे मैं एग्जैक्टली काम शुरू करूँगा, ठीक है? और मेक श्योर कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने क्लास बना ली, ठीक है? चलिए शाबाश।